Today we are going to talk about astrology and stock market. Whenever we are talking about time cycle and time series analysis, whenever we are talking about time and time axis in the stock market, लोगों को लगता है कि it's all about astrology. And yes, इसमें कोई there is no doubt that a certain part of astrological unit do work in the stock market, but आप इसके ऊपर बेस करके कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? It's a very big question. The answer is absolutely no. You cannot do that, and don't ever try that. Now, बहुत सारे astrologer, बहुत सारे content writer and content and storyteller are available in the social media talking about this astrology and its impact on the stock market, and they try to find out the correlation between the market fall or rise with this astrological unit. Now let me tell you, astrology में हमारे पास अगर आप लोग astrology की बात करते हैं, we have 9 planets, right? Now 9 planet है और हमारे पास 12 राशि से, मतलब अगर if we go back to the solars and वहाँ पे अगर हम लोग हर 30 डिग्री करके अगर हम लोग डिवाइड करते हैं पूरे यूनिवर्स को, then we get 12 राशि, okay? And there are also other method of analyzing and calculating the solars is the nakshatras. All right, there are 27 nakshatras out there. Now, please understand how foolish it is. If you go with this 9 planet, 12 rashis, and 27 nakshatra, you get more than 3,556 combinations. Now, is it really possible for you to analyze these 3,556 combinations to, analyze and put it in the market, stock market? Because आप जब भी astrology की बात कर रहे हो, that means आप सिर्फ only you are considering the psychological part of the human being. आप यहाँ पे economics की बात कर ही नहीं रहे हो. Right? The astrology basically it works on a human being कि जो साइकिल में आप बॉर्न होते हो उसी साइकिल का रिपीटेशन होता है, एंड दिस साइकिल जो जिस साइकिल में आप बॉर्न होते हो दैट्स द मून साइकिल, राइट? उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1008 बिकम्स योर लाइफ साइकिल. तो जिस मून साइकिल में आप बॉर्न हुए हो, ओके, उस टाइम पे जो प्लानेटरी पोजीशन था जो आपके ऊपर इम्पैक्ट किया, उसी का आप साइकिल कैलकुलेशन करोगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन. व्हाई? इट्स सेम. अगर आप किसी कार का स्पीड कैलकुलेशन करते हैं एंड उसका जो व्हील होता है उसका अगर डायमीटर कैलकुलेशन करते हैं, ओके, स्पीड डायमीटर, ओके, कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सिटिंग हियर इन दिल्ली और मुंबई, अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू गो टू एंड कम टू माय गुरुकुल फ्रॉम दिल्ली से, तो जो डिस्टेंस बनेगा आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो विद द स्पीड एंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, कितना टाइम आपको लगेगा. तो इट्स अ फॉरवर्ड कैलकुलेशन. सेम बेस्ड ऑन दैट वी कैन आल्सो डू द कैलकुलेशन ऑन द बैकवर्ड. अब जहां पे अपने घर से निकले हुए थे, राइट? सेम लाइकवाइज आपका जो लाइफ साइकिल है, जिस साइकिल में आपने बॉर्न हुआ है, तो इस पृथ्वी में आए हो, उसी का अगर हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग वी गेट टू नो द पास्ट लाइफ. ओके, आपका करियर क्या था एंड व्हाट वाज योर नॉलेज एंड व्हाट वाज योर प्रोफेशन, ये सब कैलकुलेशन किया जा सकता है. दैट्स रियली पॉसिबल. एंड इसी पॉसिबिलिटी की वजह से हम लोगों को पता है कि कल की भगवान कब आएंगे. ऑलराइट, इसी कैलकुलेशन की वजह से हमारे जो बुद्धिस्ट ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो लोग हमारे जो बुद्धिज्म में वी बिलीव दे बिलीव इन रीइंकार्नेशन, ओके, मच मोर देन दैट वी बिलीव. सो वो लोग क्या बिलीव करते हैं, जैसे दलाई लामा, दे बिलीव कि दलाई लामा इज वन ऑफ द बुद्धा, okay, because he is a reincarnated part of Buddha. Okay, how do they get this calculation? अगर आप भृगु शास्त्र पढ़ोगे, और वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे, तो you will get to know, okay, all these calculations how they have been doing. But इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या implication है? See, first of all, you must need to know that the way it works on the stock market, it doesn't work in the same way on the human being, and the way it impact on the human being
doesn't work in the same way in the stock market. That's why you see most of the astrologers are failing in the market. Do you think हम लोग इस generation का इतना smartest बंदा हो गए कि we only know this truth that astrology do work in the market and last 200 साल में बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था. They are too foolish. That's why in Harvard में जाके वो लोग economics पढ़ रहे हैं, study कर रहे हैं. It's a real question, right? कि last 200 साल में जब से trading start हुआ है, you are the first generation that you got to know that astrology do impact a lot in our stock market. So we need to learn the astrology. It doesn't work. Why it doesn't work? As first reason is that we have 9 planets, 12 rasis, and 27 nakshatra. If we do combine, we get 3,556 combination. It's not possible for you, being a human, okay, to catch and calculate all the studies and put and conclude it. So, number 2 reason is that the way stock market behave. If you're only trying to get the astrological part, that means you are trying to calculate the human mind, the psychology only. That's why you are trying to study the moon cycle. That's why it has been said that moon is a karak of silver. So what you need to learn? What you need to learn? And see, astronomics, why we tell astronomics in our Gurukul? Whenever you talk about Vedic way of investing, when we talk about astronomics, every other people is thinking about कि हम लोग astrology सीखते हैं गुरुकुल में जाके. But आप हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, they don't learn that. They learn the trilogical approach. A trilogy, time cycle, time series, square root of 9, and astronomy. Now this astronomy, which is part of the Vedangam, do have 18 dimensions. One of the dimension is talking about the planetary position. That's astrology. And 17 dimension is talking about astronomy and astrophysics. Now, we cannot calculate all these 3,556 calculations. वहां से जब हम लोग कोई सिद्धांतों में derive नहीं कर सकते, so what we have to do, we have to put the other mathematical application कि वहां पे जो error होता है, वो error को हम लोग वहां पे evade कर पाए. So that's why it's simply like अगर आप एक single wheel में गाड़ी चला रहे हो, it's a very हम लोग सर्कस में देखते हैं ना, single wheel में गाड़ी चलाते हैं jokers. Lekin this is a chance of falling, right? They are having a massive practice on that, so they are been able to do that. But हम लोग जो आम जनता है, अगर हम लोग उस single wheel के ऊपर हम लोग practice करना चाहते हैं, तो there are chances of falling, right? But अगर वही cycling, अगर मैं आपको 3-wheeler पैक में करवाता हूँ, okay, या आप खुद करते हैं, तो chances of falling get wiped out. Chances of fall करने के chances खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका एक wheel अगर fail करता है, so there are other couple of wheels that is going to support you. वो आपको fail नहीं करने देगा. So that's why we learn trilogical approach in our Gurukul. And that's why we say, please don't learn and stress on astrological part. It's a foolish job. Don't get into that.